everyone, welcome back to the Political Science lecture series on near peer. In the previous lecture, we discussed different forms of government, and today we'll be looking at the political concepts, and particularly we'll be looking at the notion of liberty and its safeguards. जो liberty का concept है उसको अक्सर freedom के साथ conflate किया जाता है, although technically they are two different concepts. And secondly, इसको हम अगर define करने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले जो element है वो इसको आप your ability to do what you wish to do. But in the politics, in the political thought, liberty के अंदर social, political और economic freedoms वो वाली involve होती हैं जो आप दूसरे community members के साथ enjoy करते हो. So these are the things which you are entitled to by virtue of being part of a society. So these are civic in nature. That is to say that you enjoy these freedoms by virtue of being part of a social group of a society. इसके दो essential elements हैं liberty के. The first is the absence of arbitrary restraints and the second is its responsible use under rule of law. The absence of arbitrary restraint के अंदर ये एक लफ्ज operative है, इसके अंदर बहुत important, the word arbitrary. Arbitrary means that something which is not defined, something which just happens by whim or just without any code of law. तो अगर एक किंग है और वो अपनी मर्जी से कभी भी किसी को सजा दे देता है जो उसका दिल चाहता है तो हम कहेंगे कि किंग हैज एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरी पावर. बट अगर एक जज ने लीगल प्रिंसिपल्स के तहत कोई डिसीजन दिया तो दैट इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. सो लिबर्टी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई विल हैव माई लिबर्टी only if there is no arbitrary external limitation on the exercise of my liberty. कि कोई भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से मेरी लिबर्टी नहीं छीन सकता. और ये कोई भी से मुराद यहाँ पर हर किस्म का एक्टर है. इससे मुराद सोसाइटी है, इससे मुराद मार्केट है, मार्केट से मुराद आई मीन इकोनॉमिक मार्केट, एंड इससे मुराद state भी है. So all no society, market or state can arbitrarily snatch my liberty away. But at the same time, it does not mean, the absence of arbitrary restraint does not mean that I can do whatever I wish to do and I can do whatever I like to do. That is not true. Isliye this the second principle, the second element of liberty becomes important, that liberty can only be exercised responsibly under rule of law. इसका मतलब ये है कि मेरी right to liberty is contingent upon the exertion of the same right to liberties of others. इसका एक और अंदाज कहने का ये होगा कि मेरी राइट टू लिबर्टी तब तक मेरे पास है जब तक उसको एक्सरसाइज करने से किसी और की राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही. सो फॉर इंस्टेंस आई हैव द फ्रीडम टू मूव माय आर्म, बट माय फ्रीडम टू मूव माय आर्म स्टॉप्स एट योर नोज बिकॉज आफ्टरवर्ड्स मैं आपकी राइट या लिबर्टी टू बी प्रोटेक्टेड को वायलेट करूंगा अगर मैंने अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज की. सो माय लिबर्टी इज लिमिटेड बाय योर लिबर्टी. So that is hence, as long as my exertion of my liberty is not depriving anyone else's liberty, I am entitled to that. So इसीलिए rule of law और law ने जो restrictions, legitimate restrictions liberty पे लगाई होती हैं, वो उसका part होती हैं. And that is why there's this distinction between freedom and liberty becomes very neat. Freedom अगर हम broadly बात करें इसका मतलब है to do whatever you want to do. आपका जो करने का दिल करता अगर आप वो exercise करते हैं तो वो freedom है. But that is not political liberty. Political liberty will always be checked by this one important factor कि क्या उसको इस्तेमाल करने से क्या आप दूसरों की लिबर्टी तो लिमिट नहीं कर रहे. इसीलिए जैसे एक बड़ी सिंपल एग्जांपल इसके अंदर है that freedom to murder, anyone has freedom to murder, but you do not have a liberty to murder because otherwise you are depriving other one's right not to be harmed and you are depriving them of their right to life. So for this reason, this idea of liberty is very much contingent upon the fact that overall society की liberty protect होगी. इसीलिए कहा जाता है कि liberty by an individual is enjoyed in common with other people. कि liberty कभी भी individually आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, वो कम्युनल एक्सरसाइज हो रही होती है. बिकॉज मैं सिर्फ वो वाली लिबर्टीज एंजॉय कर सकता हूँ जिनकी एक्सरसाइज करने से दूसरों की लिबर्टीज हर्ट ना हो रही हो. और ये जो लफ्ज है लिबर्टी का,
ये तारीख में बहुत अहम इसने किरदार अदा किया इस लफ्ज ने. It has been a buzzword for majority social movements, independence movements, decolonization movements और वो तमाम movements जो अथॉरिटी के अगेंस्ट या लोगों को empower करने के लिए दुनिया में चली हैं, उनके अंदर ये एक बड़ा popular slogan or it used to be a rallying cry for all such movements and revolutions. Very famous example is the American Declaration of Independence. Declaration of Independence was issued in 1776, American Declaration of Independence from the Great Britain. उसके अंदर बड़ा important ये document का मैंने जो cross section लगाया हुआ है, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. तो ये थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज inspired from the works of John Locke. John Locke ने भी right to life, liberty and property were the three cardinal rights in John Locke's book, The True Treatise on Government. तो उसका रेफरेंस भी आप अपने क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं. Liberty, equality and fraternity, these are the French words for liberty, equality and fraternity. ये वाले तीन अल्फाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया. तो in this sense these are two important examples of how liberty and its ideals have been used as a essential principle for movements for democratization, for independence, for resistance to state authority. The next important topic is the two types of liberties generally. वो political science के अंदर हम लोग इसको different तरीके से interpret करते हैं, but the kind of interpretation that I am using for the two concepts of negative liberty and positive liberty is from the book Liberalism, the Life of an Idea by Edmund Fawcett. He's a great liberal thinker of 21st century, a brilliant writer, and in this book he has traced how liberalism has evolved philosophically, how it has translated in political theory, how it has translated into action by different liberal politicians and statesmen. तो उसके मुताबिक नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उससे मुराद रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट्स है. रिमूवल ऑफ फॉर्मल रिस्ट्रेंट से मुराद ये कि मेरी लिबर्टी के ऊपर कोई एक्सटर्नल लिमिटेशन लीगल नहीं इम्पोज की जाएगी. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को राइट टू वोट नहीं देते, जैसे बिफोर सफरेजिस्ट मूवमेंट 1920 से पहले 1920 में औरतों को राइट टू वोट मिला इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो बिफोर 1920 औरतों के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं थी इन दैट सेंस कि स्टेट ने रोका हुआ था रास्ता औरतों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, बिकॉज एक फॉर्मल ऑब्स्टिकल था उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, दैट दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट. सो नेगेटिव लिबर्टी इंटेल्स, हेंस द नेम नेगेटिव, दैट you take away all the formal restraints in the path of individuals. So when women were granted the right to vote in 1920, वो legal obstacle और formal restraint उनके रास्ते से हटा दी गई थी. So that's the concept of formal negative liberty. In this, when negative liberty is granted, state acts as a passive actor. That is to say that state does not interfere a lot in your affairs. So जैसे 1920 में जब औरतों को राइट टू वोट दिया रियासत ने, उसके बाद रियासत खुद नहीं कहती थी कि आप इलेक्शन लड़ें औरतों को, कि जबरदस्ती उनसे इलेक्शन लड़वाना या इंटरवेंशन नहीं करती थी, बस एक राइट टू वोट दे दिया एंड देन इट वुड लीव द अफेयर्स टू द इंडिविजुअल्स टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट दे वांट टू डू, whether a woman wants to vote or not, or she wants to hold a public office or not, in this particular example. तो पहली चीज ये हो गई. दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी रिमूवल ऑफ लिबर्टी इज नॉट इनफ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट देयर आर सर्टेन इनफॉर्मल or historical causes of oppression and exploitation due to which a particular social group is not able to maximize its potential. अगर हम इसी औरतों की बात ही करें तो 1920 में औरतों को राइट टू वोट तो मिल गया, जैसे पाकिस्तान में भी औरतों को राइट टू वोट मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि पेट्रियार्की होने की वजह से, जेंडर स्टेरियोटाइप्स होने की वजह से, जनरली लोअर सोशल इनकम होने की वजह से, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से औरतें पॉलिटिक्स में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिस तरह मर्द करते हैं. उनके लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करना उतना आसान नहीं है, पॉलिटिशियन बनना ज्यादा मुश्किल है, इलेक्शन लड़ना ज्यादा मुश्किल है. तो स्टेट ऐसी हालत में क्या करती है कि इंटरवीन करती है और एम्पावर करने के लिए स्पेशल कंडीशंस उनके लिए क्रिएट करती है, और इसके अंदर स्टेट एक एक्टिव एक्टर के तौर पे एक्ट करती है. पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल अकॉर्डिंग टू फॉसेट इज द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन
पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल है, जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर हम औरतों की मिसाल लें पाकिस्तान में, तो कोटा जो दिया जाता है, जेंडर कोटा. सो नॉट ओनली देयर इज राइट टू वोट for women in Pakistan, which is the negative liberty, but there's also gender quota for women in Pakistan for their fixed seats on National Assembly. और उसके अंदर आपने उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी कि वो उस कोटे पे इलेक्ट होके आ सकती हैं विदाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. तो इसमें आपने एक्टिव एम्पावरमेंट के लिए इंटरवेंशन करके उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की. सो दीज आर द टू slightly more nuanced concepts than what the conventional understanding of liberty is, and this particular contextual understanding is derived from the book that I've given here as a reference, जो कि आप पेपर में कोट कर सकते हैं. और it's very important and it's very recommended कि आप इस तरह के references कोट करें. It gives an impression कि आप subject पे command रखते हैं और authority रखते हैं. The next important concept is which has been asked in the past papers as well, discuss लिबर्टी एंड इट्स सेफगार्ड्स. हमने डेफिनेशन और उसकी थोड़ी डिस्कशन अभी की है, हम उसके सेफगार्ड्स डिस्कस करेंगे. सेफगार्ड से मुराद वो चीजें हैं कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, कि अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो नेगेटिव आपकी लिबर्टी की जनरली, तो उसके लिए कौन सी सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड है. सो देयर आर न्यूमरस सेफगार्ड्स. देयर इज लव फॉर लिबर्टी, इटर्नल विजिलेंस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, एन एक्टिव सिविल सोसाइटी. तो अब हम इनको बारी बारी गो थ्रू करते हैं. सो द फर्स्ट इज द लव फॉर लिबर्टी. It's very important that people must themselves hold liberty important. So cultural values play a significant role on the political values of a society and the political system of a society. So अगर एक society के अंदर लोग अपनी liberty को value करते हैं, तो automatically it's a very important chain, right? Because एक democracy के अंदर in particular people are supreme and hold sovereign power. वो वोट करके लोगों को पावर में लेकर आते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं, और वो लॉज इन टर्न लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों की. तो अगर लोग लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझेंगे तो वो वोट उन लोगों को देंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, और वो लोग आके फिर वही ऐसे लॉज बनाएंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे. सो द क्लासिकल एग्जांपल हियर बीइंग द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज वेयर पीपल जनरली रिगार्ड देयर फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेनेवर देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन देयर लिबर्टीज, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जाता है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, काफी सारी चीजें की जाती हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझा जाए लोगों की तरफ से. सेकंड इज eternal vigilance. There is this quotation, very famous one, that vigilance is the price of liberty. कि आपको constant evaluation करनी है गवर्नमेंट की, उस पर नजर रखनी है. You have to act as a watchdog, and this vigilance would come from people, it would come from media, it would come from civil society organizations. But to keep government in check और उस पर नजर रखना और उस पर तनकीद करना और उसको ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं रियासत अपनी पावर को abuse करते हुए लोगों की liberties violate तो नहीं कर रही. Third thing is equality, and this concept is slightly nuanced. It's said that there can't be liberty without equality. कि अगर एक सोसाइटी में inequalities बहुत ज्यादा है, अगर एक तरफ बहुत अमीर तबका है और एक इंतहाई गरीब तबका है, तो इवन दो गरीब बंदे को liberty है to contest elections, but will he be able to? He will not be able to, because he doesn't have the resources to contest election. He does not have the basic necessities of life. और कोई भी बंदा आकर उसे मैन्यूवर कर सकता है, उसको वो वोट बेचने पर मजबूर हो जाएगा, वो उसको कोई पैसे देकर खरीद सकता है वोट देने के लिए, तो वो अपने राइट टू वोट भी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता if he is living in abject poverty. So gross inequalities do not make a conducive environment for the protection of liberty. So the removal of mass level inequalities or gross inequalities is very important, and the creation of equal systems is important to protect liberty. The fourth is democratic system. Democratic system liberty की protection के लिए सबसे important है, because democratic system tends to be more liberal. इसके अंदर ज्यादा accountability होती है, क्योंकि constant cycles of elections होते हैं, और उस elections के जरिए अगर कोई भी लोगों को oppress करता है, कोई exploit करता है, तो लोग उसे vote out कर देते हैं. There are other multiple levels of accountability. आपकी opposition होती है, अगर एक government गलत करती है तो opposition उस पे उसको accountable ठहराती है. तो इन सब चीजों की वजह से democratic systems are more accountable. They are more conducive for liberty.
The fifth is, and by the way, इसके अंदर आप as an example easily quote कर सकते हैं कि Western liberal democracies have more freedoms, more rights, more liberties as compared to the monarchies जो हैं दुनिया में exist करती हैं Gulf countries के अंदर या otherwise, तो वहाँ पर rights और liberties as such exist नहीं करते. The fifth is the constitutional protection of fundamental rights. This is very important in the protection of liberty because जो constitutional provisions होती हैं they are enforceable in courts. तो वो प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है, अगर स्टेट या कोई दूसरा बंदा वायलेट करता है तो द एग्रीव पार्टी कैन टेक द एक्यूजर्स टू द कोर्ट एंड देन फोर्स देम कि वो कोर्ट फिर उनके फैसला हक में डिसीजन देती है. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन हो तो उसका फायदा ये है कि अग्रीव पार्टी कोर्ट में जाकर अपना रिट्रेस करवा सकती है और अपनी लिबर्टी को रिस्टोर करवा सकती है. प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन है तो फिर रियासत को एक फोर्स्ड किया जाता है, रियासत को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स डायरेक्शन देता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज लोगों की लाजमी प्रोटेक्ट करनी है. सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन वो जो हमने पहले भी प्रिंसिपल डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन ऑर्गन, वो डिवाइड रहती है पावर तीनों ऑर्गन्स के अंदर, जिसकी वजह से नो वन ऑर्गन इज टू पावरफुल दैट इट अब्यूजेस इट्स पावर इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू ऑप्रेस पीपल एंड सप्रेस देयर लिबर्टीज. तो इस वजह से लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपस में सेपरेटेड रहती हैं और एक दूसरे पे चेक के तौर पे एक्ट करती हैं. बट सेकेंडली द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शंस कर सकती है. अगर जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड और जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव तो वो फिर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के हक में फैसले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे एंड हेंस फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. द सेवेंथ इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इसमें द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इज इम्पोर्टेंट. दैट फेडरलिज्म इसीलिए मॉडल बनाया जाता है और पावर डिसेंट्रलाइज की जाती है प्रोविंसेस को, लोकल गवर्नमेंट्स में और नीचे, ताकि पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना रहे, जिसकी वजह से आपका एक सेंटर आपका इतना मजबूत हो जाए कि वो लोगों को बाकी पेरिफेरीज की या दूसरे एरियाज की राइट्स और उनकी लिबर्टीज और उन चीजों को ऑप्रेस करना शुरू कर दे. तो दैट इज व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर is also consistent with this principle of separation of power. So separation of powers में भी आइडिया ये है कि आप पावर एक्यूमुलेशन को मिनिमाइज करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी आइडिया ये है कि आप टॉप टू बॉटम पावर डिवॉल्व करें ताकि कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए. रूल ऑफ लॉ is the idea that everyone is equal before law. अगर रूल ऑफ लॉ किसी कंट्री में नहीं है इसका मतलब है कि access to justice is a privilege and if access to justice is privilege is not available to everyone, this means there can be no liberty. Because अगर rule of law नहीं है तो इसका मतलब a powerful person can snatch my liberty and get away with it. But if there is rule of law, then it would mean कि अगर कोई पावरफुल आदमी, अमीर आदमी भी मेरी लिबर्टी को एक्सप्लॉइट करता है तो उसके खिलाफ फैसला भी आएगा और रियासत उसके खिलाफ एक्शन भी लेगी और मेरी लिबर्टी को पे और ये एक डिटरेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा और कोई किसी की लिबर्टी क्वेल नहीं करेगा. लेकिन अगर एक मुआशरा ऐसा है कि कोई भी पावरफुल आदमी किसी के साथ ज्यादती करके उसकी लिबर्टी वायलेट करके एंड कैन गेट अवे विद इट, तो फिर ज्यादा बहुत सारे लोग इस तरह करेंगे और पावरफुल लोग ये बार बार करेंगे एंड दैट इज व्हाई इन सच अ सोसाइटी लिबर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट. सो रूल ऑफ लॉ इज साइन को नॉन फॉर लिबर्टी. लास्ट इज the presence of active civil society groups and non-governmental organizations. Non-government organizations, civil society groups are very important agents of protecting liberty because वो they do advocacy, वो litigation करते हैं, लोगों के behalf पे pro bono cases लड़ते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, वो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करते हैं, वो ये सारी चीजें बिल्ड करते हैं कि लोगों की फ्रीडम्स और प्रोटेक्शंस, राइट्स जो हैं और लिबर्टीज जो है ना उनकी प्रोटेक्ट रहें. सो दिस इज द फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट दिस राइज ऑफ सोशल जस्टिस मूवमेंट्स. आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यू हैव ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच force governments to protect freedoms of their individual citizens, liberties of their citizens, rights of their citizens. और आपकी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो इस किस्म की प्रो लिबर्टी मूवमेंट्स जो है वो रन करती हैं. सो इन जनरल ये सारे आपके सेफगार्ड्स लिबर्टी के बनते हैं. और हमने इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर अगर होगी एक ऑर्गन में या एक इंडिविजुअल में या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में तो लिबर्टी वायलेट होती है. इसलिए देयर शुड बी power should be broadly distributed between different sections in society. It should not be accumulated ताकि liberties लोगों की violate ना हो. And
As we have been progressing with the political science lecture, you're seeing this trend that how freedoms and rights and liberties are very important in the political thought of the philosophers, of the academics who have contributed to theory of political science. तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करेंगे. I'll see you guys in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.